Hello students, this session is for the Series 1 2020 aspirants, right? So you must be going through the today's newspaper as well as the happenings which has taken place in Maharashtra politics. आज आपने दोपहर बाद जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो आया वो आपने काफ़ी सुना होगा, मे बी आपने न्यूज़पेपर में देखा हो या फिर आप रेडियोज़ वगैरह या फिर टीवी देखते हो बाई चांस. सो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग for any UPSC aspirant, considering you are appearing for the Series 1 2020, polity is always important for us, and you know that कि majority of the questions are nowadays dynamic in nature. काफ़ी updated questions होते हैं. So इस पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक और you can say that कि महाराष्ट्र की नौटंकी से आपके लिए क्या important है? What is important for you as a serious aspirant from all this political drama, whatever has happened in Maharashtra, right? पहले मान लो वो फडणवीस जी ने सीएम की पोस्ट की शपथ ली ओथ, राइट? देन डिप्टी सीएम अजित पवार जी, देन टुडे द बोथ ऑफ देम रिजाइन, राइट? द टॉक ऑफ द टाउन वाज सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आई एम गोइंग थ्रू. तो इस सेशन में मैं यही बताना चाहूँगा कि व्हाट यू कैन से आर द डायनामिक टर्म्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेम स्पीकर, जो आप 2 दिनों से सुन रहे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम टर्म्स लाइक व्हिप, राइट? मेजॉरिटी, गवर्नर रोल, डिस्क्रिशनरी पावर, बहुत सारे टर्म्स हैं, बट दिस आर डायनामिक वन. तो आपने पढ़ा भी होगा, बट होता क्या है कि कभी कभार भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देता. तो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ ब्रीफ लुक ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज प्रोटेम स्पीकर. और टर्म के अलावा आई विल आल्सो गिव यू वन एमसीक्यू, राइट? सो जस्ट टू शो यू दैट व्हाट काइंड ऑफ एमसीक्यू वी नीड टू प्रैक्टिस. आपको किस तरह के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बेसिकली मैंने इस बात का ध्यान रखा है. तो थोड़ा सा टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, विल डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट so that we can have an idea, okay? And it's all about being chief minister, so we'll discuss one question based on the post of chief minister as well, right? So, along with explanation. So let's start with the discussion. Learn lessons for the serious aspirant from all those Maharashtra political drama which happened on Constitution Day, that is 26/11, the Mumbai attack day as well. And the Mumbai was again in news with the same hotel. ट्राइडेंट में ही बैठक चल रही थी. उद्धव ठाकरे जी अभी भी ट्राइडेंट में, राइट? अगर हम 8 बजे की बात करें जिस समय हम सेशन ले रहे हैं, राइट ना, उद्धव ठाकरे जी इज स्टिल इन ट्राइडेंट एंड ऑल दोस टॉक्स आर गोइंग ऑन कि क्या करना है, कैसे, कहाँ शपथ लेनी है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए, घटना नहीं. सो व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर, राइट? सो जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट है सेड कि आप जल्दी से जल्दी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करें, राइट? कौन नियुक्त करेगा? who will appoint? Governor in the state, governor will appoint. और अगर मान लो यही चीज लोकसभा में होती है, if you remember before मोदी जी took oath, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, तो वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया था. वो क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं, राइट? उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है, ओके? सो प्रोटेम स्पीकर के पास if you concerned what are the major questions that can be asked. So protem speaker has the same power as that of a speaker. अगर ये statement हो तो correct है, क्योंकि जब तक protem speaker role is limited till the point speaker is appointed. So that means he is the supreme at that moment. Okay. So he has to carry out all those appointments and orders according to the constitution, right? So generally in a state, if you talk about in recent context, Maharashtra, governor, that is, will appoint protem speaker for administrating the floor test, जिसकी बात 30 को हो रही थी, 30 नवंबर को, बट अब कल ही होना था. बट बिफोर दैट फडणवीस जी रिजाइंड, राइट? सो देयर इज नो नीड फॉर दैट. अब तो उद्धव जी शपथ लेंगे एंड देन ही हैज टू प्रूव हिज मेजॉरिटी, राइट? नाउ द हिडन क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट है, व्हिच आई फील दैट कैन बी ट्रिकी वन, इफ दे आस्क कि as per the rule mentioned in constitution, the senior most MLA is selected as the pro tem speaker. Now, what is that senior most? Is it in terms of years, age? No, it's in terms of the number of times, or you can say the number of years you have been the member of the house, right? कि आप कितने साल से हैं, right? So it's not a convention. No, sorry, it's not a rule. It's a convention. What is difference? Governor can avoid this fact as well. जैसे आज की बात करो तो कालिदास कोलंबर जी, who actually is from BJP, has been appointed as pro tem speaker for the time being, right? तो अभी उद्धव जी को वो शपथ दिलाएंगे, फिर स्पीकर का चुनाव होगा, ओके?
बट एज पर रूल अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि सीनियरिटी के टर्म्स में ही होना चाहिए, राइट, तो बाला साहेब थोराट को होना चाहिए था, बट बाला साहेब थोराट हियर is also the head of the Congress MLA, who has been the member of the House this time, अभी डिक्लेयर किया उनको, तो उनको खुद ही शपथ लेनी होगी डिप्टी सीएम की, एज इन न्यूज। आई डोंट नो कि कल क्या होगा, बट जो न्यूज कह रही, तो उनको जो है सो प्रोटेम स्पीकर अभी नहीं बनाया गया, राइट। सो इट्स नॉट कन्वेंशन, नॉट मैंडेटरी कि आप सीनियर मोस्ट को ही बनाएं। जनरली क्या होता है, 4-5 नाम आप सजेस्ट करते हैं, उनमें से गवर्नर का डिस्क्रिप्शन होता है कि आप किसी एक को बना ले एज एग्रीड अपॉन बाय ऑल ऑफ देम, राइट। उनको बेसिक प्रोसीडिंग्स ही करानी होती है, ऑलराइट, ओके। सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शन, तो ये आप याद रखना, सीनियरिटी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, इट इज इन टर्म्स ऑफ टोटल टेन्योर ऑफ, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई 91 ईयर्स के हैं तो वही बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीनियरिटी एज में नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव इन्वेस्टेड इन हाउस, क्योंकि एज फार एज आई रिमेंबर द बाला साहेब थोराट हैज बीन इन हाउस फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। आई थिंक 8 बार जीते होंगे, अगर 40 साल है तो 8 टाइम्स की उनका एक्सपीरियंस होगा। इट्स अ ह्यूज एक्सपीरियंस एक्चुअली। लास्ट टाइम इन महाराष्ट्र द सीपीआई एमएलए वाज द प्रोटेम मेंबर, राइट। तो जरूरी नहीं कि विनिंग जो मेजॉरिटी है उसी का हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता, राइट। सो इट्स मोर और लेस इन द गवर्नर डिस्क्रिप्शन एक्चुअली, okay। So as per the rule book of the Rajya Sabha, or the you can say that state governance, it's mentioned that the majority of the tasks are same as that of speakers, whichever have been mentioned, supervise the activity till the point the next you can say that speaker is appointed, तब तक उनका रोल है। जैसे ही नया स्पीकर होते हैं उनके जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है एक तरह से, राइट। I have mentioned some of the case relevant judgment, but I am sure that this type of questions will not be asked. They will not be asked which of the following case or the judgments are related to the appointment of the pro tem speaker or the speaker, right? तो सुरेंद्र वसंत सिरसत case, right? और ये सब पूछेगा नहीं, but you need to remember one important thing. वो तो मैंने देखो न्यूज़ के लिए लिख दिया, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, but I am sure these things will not be asked. But one important thing that can definitely be asked is related to the Sarkaria Commission, because Sarkaria Commission also mentioned you can say the powers privilege related to the pro tem speaker, right? तो ये आप याद रखना, Sarkaria Commission is always important for UPSC exam. Now if it is concerned to the state, right, if it is concerned to the state, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ आपको। If it is concerned to the state, you can see here chapter 3 of the constitution talks about this, while article 182 is also concerned, although you can keep in mind, but at least keep this chapter 3 in mind. This might be important because जब स्पीकर डिप्टीज पर कुछ भी नहीं है तो गवर्नर जो है सो एक को अपॉइंट करते हैं कि नेक्स्ट कार्रवाई तक आप ये काम देखिए, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लेट्स डिस्कस, ये मैंने सरकारिया कमीशन के बारे में आपको बता दिया, राइट। सो कमिंग टू द जैसे आपने पढ़ा कि आर्टिकल 182 इज रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, तो उनमें क्या क्या प्रिंसिपल है, एंड जो सरकारिया कमीशन है दे हैव आल्सो एग्जामिन्ड द आर्टिकल 163(1), राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सेम सिचुएशन इज टू द लोक सभा as mentioned is article 95(1) of the constitution. Not so important, but let's have a look over this question. So there is a MCQ which we have updated due to recent happenings. आप उसको जरा पढ़ें एक बार and try to solve it. It is good one. Consider the following. UPSC ऐसे ही कुछ पूछती है with reference to the pro tem speaker, right? So first है आपका the speaker of the Lok Sabha appoints a member of newly elected Lok Sabha. ये सेंट्रल से रिलेटेड हो गया। स्पीकर ऑफ द लोक सभा, नाउ स्पीकर तो रोक नहीं करेगा ना, बिकॉज तब तक तो स्पीकर है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो लोकसभा में तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ओके। तो ये स्टेटमेंट तो इजी था जो आप आसानी से कर सकते थे। स्टेट के कंटेक्स्ट में इफ आई से दैट स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट्स द द न्यूली इलेक्टेड प्रो टेम स्पीकर, ऐसा नहीं है, वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ओके। क्योंकि पिछले स्पीकर का टेन्योर जैसे ही नया लोकसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लो नए लोकसभा की प्रोसीडिंग कल स्टार्ट होनी है मुंबई की, तो पिछले स्पीकर जो है जैसे ही हाउस बैठेंगे उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, राइट। द प्रो टेम स्पीकर हैज ऑल द पावर्स एज दैट ऑफ स्पीकर। लेट अस सपोज कि आपको ये नहीं पता फॉर द टाइमिंग, तो कीप इट इन डाउट, तभी देखते हैं। ही एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ टू द न्यू मिनिस्टर्स ओनली, राइट। तो ये जो वर्ड है आपका ये गलत है, ओके, ये आपका गलत है। वो हाउस के सारे मेंबर्स को दिलाएंगे ना कि पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं,
तो सेकंड वाला जो आपका आपसे पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो ये दोनों गलत हो गया, तो सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर इज बी। ओके, आई हैव सम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर यू एज वेल, अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं या आपको लगता हो कि नहीं कुछ नया है तो आपके रेफरेंस के लिए, दैट्स व्हाई वी केप्ट द एक्सप्लेनेशन। दिस इज व्हाट this type of MCQ which are generally present, what we are preparing is dynamic polity booklet. If you have gone through the previous series dynamic polity, so you can find such type of explanation in the polity booklet as well, right? So this is supplementary notes, matlab what is the background of this polity, pro tem speaker, right? So constitution, as per the constitution, the speaker of the Lok Sabha vacates, अगर हम सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और अगर आप स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो स्पीकर ऑफ द, आप कह सकते हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली, दिस इज इंपॉर्टेंट, एज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आप गवर्नर कर लो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, द मेंबर ऑफ द हाउस, राइट, ओके, एंड दे हैव ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर, राइट। His main duty is to administer oath to all the new members. Important. Okay, this was one of the point which was present in MCQ. Right. So he also enables the House to elect the new speaker. Correct. Important one. Okay. When the new speaker is elected, this is what I explained actually. The office of a speaker pro tem speaker cease to exist. मतलब वो खत्म हो जाता है. Right. That's why it's temporary. जैसे ही नए speaker आए, उनका रोल खत्म है. Right, so ये था प्रोटेम स्पीकर के बारे में. Let's talk about another term, that is term नहीं, चीफ मिनिस्टर के बारे में तो आप वैसे भी बहुत कुछ जानते होंगे. एक क्वेश्चन है आपके लिए, so let's have a look over this question. With reference to the office of chief minister, consider the following statement. मान लो उद्धव जी शपथ लेते हैं. He must prove his majority in the state legislative assembly before being appointed as chief minister. Now, अगर आप अपडेट रहते हैं तो इजीली कह सकते हैं. देखो, फडणवीस जी took the oath, but majority तो बाद में प्रूव करना है. उसने कहा before being appointed. No, first you can be appointed as CM by the governor and later on you have to do the floor test where you have need to prove your majority. पहले आप शपथ दिला देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई साहब करवा दो, नहीं तो आपकी सरकार गिर जाएगी. Okay, so again ये discretion power है. That's why Supreme Court also said कि we are not going to question the discretionary power of the governor which is as per the provisions of the Constitution. जैसे कुछ लोग आरोप गवर्नर पे भी लगा रहे थे, but if you are politically neutral and if you are as a UPSC aspirant you need to be, and if you look over the rules it's mentioned discretionary powers. So governor can call or you can say invite party to form government चाहे गवर्नर चाहे तो आपको भी कल के डेट में बुला सकते हैं कि आओ तुम सीएम बन जाओ, आपको वो तो दिला सकते हो, but it's no, you know that you are not going to prove your majority, वो अलग बात है. but this is something called governor. गवर्नर को आंसर करना जरूरी नहीं हुआ. ओके, और यहाँ तो सब कुछ रूल बुक के हिसाब से ही था. फर्स्ट he invited the majority one, फडणवीस जी, he denied, then he asked give time to others, कोई आया नहीं, then अजीत पवार came to फडणवीस जी and then you know they have the signature whatever it is real or fake, but the government is not going to verify. Supreme Court also said it's not the duty of the governor to verify the signature of the document. He said okay, do you have majority, you have submitted this paper, let's take the oath, right? But the manner of in which the oath, the timings in which the oath was taken is questioned by the people, of course, right? That is a separate issue. We are not going to discuss the political insight. Okay, last second question option है, he holds office till the announcement of the next election. No, सरकार कल भी गिर सकती है, परसों भी गिर सकती है. The maximum tenure can be 5, but आप तो गवर्नर विल पे है ना. The tenure of the chief minister is on the will of governor. If right, अब ये नहीं कि गवर्नर कभी भी कहेगा कि आप रिजाइन कर दो. What you have to enjoy the majority of the house. If you are not going to enjoy the majority of the house, governor can ask you to resign कि आपका नहीं हो सकता. Okay, right? So he holds office till the announcement. ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है. ओके, तो आपका दोनों स्टेटमेंट इसमें जो है वो गलत है. सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम जस्ट राइटिंग डाउन सम टर्म्स. मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप खुद से भी करो, डोंट रिलाई एवरीथिंग की कोचिंग ही करें. बट दिस इज व्हाट वी डू. दिस इज द सम टर्म्स लाइक व्हिप्स. नाउ इफ दे आस्क यू व्हिप हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ. Who is going to be the chief whip? जैसे आप सुनते होंगे द एनसीपी ने पहले अजीत पवार को whip नियुक्त किया था,
राइट, पार्टी हेड जो होता है who calls upon all the MLAs कि ओके आपको प्रेजेंट रहना है, यू हैव टू वोट फॉर दिस इशू, राइट. बट आप किसी जयंत पाटिल जी को किया है शायद. व्हाट इज विप? ओथ एंड एफर्मेशंस कौन से पार्ट में है? व्हाट इज ओथ एंड एफर्मेशन, राइट. रोल ऑफ गवर्नर, राइट, tenure of governor, okay, and what we say that last the CM, deputy CM, how many number of deputy CMs can be possible, कितने हो सकते हैं, right? Can we have 5 deputy CMs, right? What is the maximum number of ministers? ये सब common question है. So this is how you have to elaborate a background. आप कोई टॉपिक लो तो इंटरेस्टिंग, ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, महाराष्ट्र में नाटक चल रहा है, बट उसको एंजॉय करो क्वेश्चन पर्पज से. इफ यू आर अ सीरियस यूपीएससी सीरियस aspirant, that's what we do, that's what we compile the questions along with explanation, so that कि आपका context के साथ साथ questions का भी revision हो सके, and try to learn the elimination as well, right? Don't know, you should not cram कि okay ये answer है, try to learn why that particular option is not the answer. That will always give you an edge ahead of others. Thank you, hope you have enjoyed the session. If you feel कि okay ठीक है, कुछ और आपको बताना है, कोई topic है, do share us, do comment. आप हमें बताइए कि हाउ वाज इट. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.